Hello and welcome everyone. I hope I am audible and visible to you. If I am audible and visible, those who are there on YouTube, if you can tell me that I am audible and visible so I can start this session today. All right. So I'll be waiting for few chats to start, few messages, and then I can start. Okay, good afternoon for those who are here or good evening, whatever you can say. So आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है, as you all know, key forms are out for CEED and UCEED. So we are going to discuss part B of CEED and UCEED, and we are going to take a look at how to tackle these part B questions and how to specially prepare for it. So first, I wanted to share a PPT, but I think PPT share होने से it becomes boring. So I wanted to talk about some topics. If you वीडियो बनाने में थोड़ा मेरे को ही खुद हिचकिचाहट होती है कि it might sound थोड़ा सा motivation वाला टाइप का. Don't want to go into motivational thing. I want to create videos or topics where the content is of some help. चाहे आज या 2 साल के बाद it can be of some help to students. So I generally try to avoid motivational वाली type of चीजें. But this exam का पूरा एक जो setting है, it also demands some kind of mental preparation which comes with it. So that is I want to tackle that. So before I get into take a look at all the questions asked in part B, if I'm able to complete today in 1 hour, fine. Otherwise, we'll continue it next week also. But I'll make sure कि ज़्यादा से ज़्यादा questions मैं कर लूँ. If you have any question, you can put your questions in the chat box also on YouTube, and I will take those questions. Okay. So so Zoom link is not there, Pratik, because वो disturbance हो जाता है. Right now I do not have the 2 screen setup where I am, so it becomes difficult for me to switch between YouTube and Zoom. Right, but if you have to take those questions, इससे मुझे भी disturbance कम होगा क्योंकि सिर्फ YouTube के ही questions लेने हैं, तो उससे discussion को hindrance नहीं होगा. Anyways, let's start with the part that is there a lag? Students are saying there is a lag. Is there a lag, guys? Let me know if there is a lag. I hope it is fine now. I'll wait for the right connections. I have changed my Wi-Fi. I hope it is fine now. Let's see if this works on. Is there so much lag? Okay. So now, so now I've changed my Wi-Fi also. So I think the network issue. Let's see. All right, I'll continue then. Let's start with the topic, preparing for part B. There are 2 things that I want to talk about. Please note down if you can. And this is very important even before you start रहे हो. इनके बारे में पहले उनको prepare करने से पहले इन 2 चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए. Point number 1, I think I discussed this last time also, and that is it fine now? Please let me know. Okay, so I'll even in case the video that is recorded on YouTube is of not good quality, I am recording this video here, so I'll put it there with after editing and also. Okay, so don't worry about it. If you are here, if you can hear me, if I am audible to you and the audio has no lag, so please bear with me here and please listen to me. Okay, so the topic that I'm talking about is part B ka preparation. Even before we start our preparation, the first thing to know about is how to approach this part B, right? So I'm going to talk about 2 points that is very important. First is, like I said last week also, which is practice ka part. When I say practice, practice is related to part B ke questions that are asked in the exam. Okay, that is the important part.
first of all. But even before you start your week of practicing question, इतने सारे हमारे दिमाग में आई वुड से कि एप्रीहेंशंस होते हैं, इतने सारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि ये कर पाएंगे, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा. सो इवन बिफोर यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, you need second point, which is more important, but that should be first, but I am taking here as second. I'll tell you why. So the first point is, of course, practicing the questions directly, nothing else. And second part is disassociating yourself from distraction. Now, I'm not talking about distractions like phone and all. No. I'm not talking about that. आई एम सेइंग डिसएसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने देखा है कि आई हैव टू कंप्लीट दिस सिलेबस, आई हैव टू कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक्स. कैसे होगा जब हम करने आज जो टॉपिक करने बैठे हैं उसको छोड़कर दुनिया जान के सारे और टॉपिक के बारे में सोचने लगते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन कि मैं शुरू कहां से करूं, है ना. सो इफ यू कैन डिसाइड कि भाई अगर मैंने पहले डिसाइड कर लिया आई एम गोइंग टू टेक अ लुक एट दिस टॉपिक, एंड देन यू विल कंटिन्यू दैट टॉपिक टुडे विदाउट फिगरिंग आउट कि भाई बाकी टॉपिक कब. सो दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन कि इतना सारा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक मैं आज ही के दिन में कवर कर लूं. करने बैठे दिमाग दूसरे पे जाता है. फर्स्ट. सेकंड इज एक्यूमुलेटिंग टॉपिक्स और क्वेश्चंस और मटेरियल फ्रॉम एवरीवेयर. हम करने बैठे हैं क्वेश्चन, द एम इज कि वी हैव टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन पार्ट बी एंड सी हाउ वी आर परफॉर्मिंग. मे बी टेक अ लुक with reference and attempt a question. चाहे टाइम लगे उसमें, it doesn't matter. But what we end up doing is we start accumulating questions. और ज्यादा questions मिल जाए, वहां से भी टेस्ट सीरीज मिल जाए, इनका भी टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाए, और questions का मुझे भरमार मिल जाए, कुछ मटेरियल डाउनलोड करने को मिल जाए, और हम 2 घंटे सिर्फ मटेरियल डाउनलोड ही करते रह जाते हैं, 3 घंटे. एंड देन अच्छा कोई बात नहीं, आज मटेरियल डिसाइड कर डाउनलोड कर लिया है, from tomorrow onward I will start attempting question, and tomorrow the same thing happens. Because attempting question, yes, and finding material, out of these two, finding material, looking for material is a very easy job. इसको बस बैठ के इंटरनेट पे सर्च करना और कुछ नहीं करना, दिमाग का इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो वो करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वही करते करते टाइम निकाल देते हैं. इवन इफ यू हैव ओनली फ्यू क्वेश्चंस बट यू सॉल्व दोस क्वेश्चंस from different perspective, that relating questions from everywhere. And this is happening every year. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पहली बार आप आ रहे हो तो मैं आपको ऐसी बात बोल रहा हूँ. This is happening every year for last 10 years. ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है. So please try to refrain from this. This is second point. So I'm talking about अभी distractions that happen. I'm not talking about phone वाला distraction, TV वाला distraction. ठीक है. Third is, even if you have solved a question, any question part B, the next thing that you're looking for is the solution. What is the best solution? On what solution will you get 100 out of 100 or whatever marks it is, full marks on what you have to draw to get full marks. अब solution तो इतनी आसानी से कोई मिलेगा नहीं, ना कोई इतना आसानी से शेयर करता है अपना solution. In that case, you will go on and look for solutions. कोई अपना solution दिखा दे, ये कर दे, वो कर दे, थोड़ा सा दिखाएं कि अच्छी drawing कैसी होती है, what level of drawing is required. So these are all in terms of solution only. Again, this is also a distraction. If you forget all this, and I am telling you this because I have proof of this. There are students who joined us last year in September, October, and still they could get into IITs because they only focused on their preparation, nothing else. They never, because they were very bad in drawing, right? So what they wanted was कि मैं अगर किसी और का ड्राइंग देखूंगा तो मैं वैसे भी और डिमोरलाइज हो जाऊंगा. सो इससे अच्छा मैं अपनी ड्राइंग पे ध्यान दूंगा. एंड माय एम इज टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 question डेली from October on. 1 question daily, that is what my aim is. December आते आते that person increased question from 1 to 4 daily basis पे. So automatically improvement दिखने लग गया. So these are distraction. अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको लिख लो. Distraction है looking for all the topics that I have to cover when I am doing a question. Second, accumulating material from the internet. And third one is looking for best solution, benchmark solution. कोई भी चीज का solution देखने में time waste कर देना is the distraction. जब ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया ना एक बार कि भाई मुझे डिसाइडेड है व्हाट आई वांट टू डू, ओनली देन यू कैन गो एंड सिट फॉर द प्रैक्टिस. सो दैट इज व्हाई इवन दो प्रैक्टिस और अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, यू नो, इट इज द बिगेस्ट फ्रिक्शन दैट यू विल फील इन योर लाइफ राइट नाउ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि उस वहां पे दूध का दूध पानी का पानी होता है. वेदर यू नो इट और नॉट, वो वहां पता चलता है. So in that case, question attempt करने के अलावा बाकी सारे काम करते हैं. So once you are free from these distractions, then you can go and attempt a question, right? If you are attempting question, let's say आपने बोला कि यार मैं तो कर रहा हूँ attempt question और ना पिछले 2-3 हफ्ते से, nothing is
इम्प्रूविंग, मैं क्या करूं, मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं क्वेश्चन कर करके मैंने इतने पेंसिल रगड़ दिए कि अब कॉपी में से आग निकलने लग गई है, चिंगारियां निकलने लग गई है। आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, बट द पॉइंट इज दैट यू वांट टू से इज कि मैंने बहुत क्वेश्चन कर लिए, आई डोंट थिंक आई एम इम्प्रूविंग, right? This is the third point that I wanted to tell you. It doesn't work that this way, right? You in your preparation right now, see, you are, when you are working on your drawing skills or your mental skills, your form, your modification of mind is changing. I hope you understand. Modification of mind is the way you are thinking for a question, that is changing. But you yourself will not be able to, see this कि आपके अंदर पहले क्या था और बाद में इतना चेंज आया है. Maybe someone else will now give you a question, maybe will be able to see this, your improvement or way you approach a question. Or maybe if you are in a certain level, if you are observing things, if you have this habit of observing things, maybe you'll be able to observe your work also. और अगर आप अपना डेटा मेंटेन करके चल रहे हो, even then in that case also you'll be able to see कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर किस लेवल पे इंप्रूवमेंट हो रहा है. So the point is, do not think about this कि when the improvement will start showing. The only point is it requires continuous and prolonged sessions without distraction. So again I said distraction. So अगर मैं बैठ गया क्वेश्चन करने के लिए, for me that is my concentration. For me that is my meditation. That is what I want to do. I just want to dive into the question and I want to forget everything. Even if it is for 20 minutes, 30 minutes, 2 hours, it doesn't matter. As of now, I am telling you again, the exam is in the mid of January. So you do not have to worry about time as of now. You have ample amount of time as of now. Think of, delaying your timing wala thing till December. Mid-December tak you can do that. Because after that also you will have a month. Mid-December के बाद भी. तो अभी timing नहीं सोचना है. अभी quality सोचना है. So for that quality, you will have to dive in the question. Just be with the question and have prolonged session without distraction, without break. अगर ब्रेक हो भी रहा है, when I say break, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 8 घंटे बस वहीं बैठ गए और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे करना हो. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. You dedicate some time. If you're not able to solve it, then go and look for internet for some references on from Pinterest and all, and then come back. Even searching on internet. Last time I said searching on internet, go and find references on internet. When I was talking to some of the students, they said कि भाई जब मैं इंटरनेट पे रेफरेंसेस ढूंढने जाता हूँ तो मैं तो कहीं और इंटरनेट पे ही चला जाता हूँ. Then I never come back on to my notebook. So the point is, even there you have to use your phone or whatever, a timer कि भाई I will go and look at it for 15-20 minutes, then I will come back whatever I have been able to find it. Then I will not go for next 1 hour maybe. So this way you can do it, right? Also, when you are attempting any questions on part B, I will take a look at the question from part B. I will share my screen. But even if you are attempting a question on part B, the point is, आप कॉपी खोल के कितने टाइम बैठे हो, दैट इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन. इवन कंटेम्प्लेटिंग ऑन क्वेश्चंस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल, एंड दैट इज मोर रेलेवेंट फॉर the second question that is asked in part B of UCEED and all the seed वाले question number 1 को छोड़ के, मतलब 2, 3, 4, 5 वाले question में you will need contemplation even beyond when you are sitting for your studying or preparation or whatever, because this is design is about finding solution, and solution you will find everywhere in this world. It is not that कि आपको ये गेट और जेई की तरह वहां पे कोई बुक है, सिलेबस है, and then you will only find the solution. It is not like that. So contemplation is also part of it. The last and the most important part that I want to talk about is, which I don't think anybody is talking about or you have even thought about it, but I have repeated this again and again, but because nobody was listening, I will have to say this again. The point is, this is what you wanted to do. This is what you wanted to do in your life, right? किसी के भी माँ बाप ने धक्का दे करके डिजाइन पढ़ने के लिए नहीं बोला होगा, लाइक दिस से इन मे बी जेई, नीट और गेट और व्हाटएवर, या फिर सरकारी एग्जाम फॉर व्हाटएवर. बट आई हैव नॉट हर्ड एनी पेरेंट सेइंग कि भाई तुम्हें डिजाइन का एग्जाम निकालना है. रेयरली दैट इज द सिचुएशन. You want to do it, that is why you are here. This is first thing. Now, because you wanted to do it, ultimately you never wanted to. Now you wanted to be into creative industry because you never wanted to be into the rat race कि भाई सब engineering कर रहे हैं तो मैं भी engineering करूँ, सब नीट कर रहे हैं तो मैं भी नीट करूँ. You wanted to avoid that. That is why you came here. That is, remember this. पता नहीं कब हुआ है वो, बहुत ऐसा लग रहा हो कि बहुत साल पहले सोचा, but remember this, what whenever it happened in your college, in your school days, but this is what you thought about, right? But when you came here, when you started looking for the colleges and all and preparation, then you came to know about IIT. The moment you came to know about IIT, जो rat race हम छोड़ कर आए थे, वापस उसी rat race में कूद रहे हैं. Don't you think so? So the point is,
कि you never wanted to get into rat race, but here you are again into rat race. And the moment you are into rat race, you are again doing the same thing, वही cramming, वही vomiting, and you are expecting कि हमारे को सामने से कोई टीचर या ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो हमें दे दे और हमें बता दे कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो हमें क्वेश्चन दे दे और हम उसी तरह से जाके उसको वॉमिट करके आए. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. दिस इज क्रिएटिव प्रोफेशन. यहाँ पे भले ही अभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लोग दे देंगे जो कि एग्जाम में आते हैं और बाई चांस वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए. इवन इफ दैट हैपन, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, and with joining hand, I want to tell you, nobody, I don't want to offend everyone, you will not be able to survive in the industry. You will not be able to survive. In the creative industry, every month, every week, you have to come up with new idea. You have to come up with solutions that do not exist. Their tutorial do not exist on internet. You have to find those problems. ठीक है, तो उसके लिए अभी से ही preparation start हो रही है. So don't think about it from that perspective. So the point is, if you have a positive outlook, and you wanted to become a designer, you wanted to get into creative industry, it is not just IIT that will make you designer. Once you get rid of this idea, I am not saying that, please, I am not saying ki do not attempt IIT ka exam. I am not saying that at all. Please go and attempt. The point is ki let's not make IIT is the goal. IIT is just the means, or NID is just the means. You can become designer even without these college tags, for sure. Okay, and there are avenues these days. So let's not get into that for now. But yes, positive mindset is very important. Ki yes, I will practice this question. I will attempt part B question. And yes, I will make some improvement. I will take some time, maybe others will be able to do it in few hours. I will take few days. It doesn't matter. I want to do it, and that's why I will do it. With this positive mindset, I am saying this. What I am actually want to say is ki even when you are attempting questions like this way, as if you are involved in some kind of prayer. I hope you get it. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पूजा और भगवान और इन सब में नहीं मानते होंगे. I don't want to push you through that, but my point is the affection that you have for your work. It is said, na, work is God. The affection that you have, the positive outlook that you have, that I will be able to do it. Sooner or later, I will be able to do it. You will see that there will be improvement, because you will see that there is a love that you have for profession, or love you have for learning design, and then you will see everywhere it is design. That is I wanted to tell you. I don't know how many of you will understand this as of now. अभी हो सकता है कि एग्जाम के चक्कर में सिर्फ एग्जाम ही दिमाग में दिख रहा हो, and you will not be able to understand what I'm trying to say, but sooner or later you will understand what I'm trying to tell you. Anyways, so also I want to tell you, with this positive mindset, see, all your positive mindset will vanish 1 week or 2 weeks before the exam. For some of you, even right now, also your positive mindset has vanished, because you are into the anxiety वाला trap कि भाई IIT में नहीं हुआ तो मेरा जीवन खत्म, फिर मैं अगले साल क्या करूंगा, क्या करूंगी, मैं तो पेरेंट्स से लड़ करके इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, and ये this and that and all the reasons that you have, I'm sure. But if you will get all this in your head, with all this baggage, if you will go and sit for the exam, even 2 questions you make wrong and you will not be able to survive beyond that. So you will have to forget that. So for that reason, I'm telling you, try to get rid of this and enjoy the process if you can. And time is not important as of now. Like I said, attempt on quality, come up with quality, attempt the question and try to understand why they are asking this question. What is it that is they're expecting? The beauty about CEED, UCEED exam is they give you, evaluation criteria as well. We will see that. They give you evaluation criteria as well. So you can decide कि भाई मुझे क्या ड्रॉ करना और किस पे मार्क्स मिलेगा. ज्यादा घूमने की जरूरत ही नहीं है. All right, I will take some questions on some question. पार्ट बी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना यार, मुझसे पूछो, अपन आपस में ही पूछ रहे हो. ओके, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? मुझे भी डिजाइन एग्जाम एडमिशन लेना है. कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? यू विल हैव टू गिव सीड, NID and NIFT, and then there are some private colleges as well, good private colleges, you can attempt those as well. उसमें scholarships भी होते हैं, so attempt करो private colleges के exam भी. Don't worry about it as of now. ऐसा थोड़ी है कि आपने हो गया तो आपको घर से उठा के ले जाएंगे. So please do questions as well. I mean, attempt those exams as well. I'm solving questions in dream also, Anuj is saying. Okay, then you are in the next level of preparation in that case. Anyways, if you are
jokes apart, just wanted to tell you, if you are truly involved into something in your waking state, तो ऐसा होता है कि ड्रीम में भी आपको वो चीजें होने लग जाती हैं. सो मतलब आप ऐसा है ना, अगर आप बहुत ज्यादा उस चीज में इन्वॉल्व, तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग. बट डू नॉट टेक प्रिपरेशन ऑन योर हेड. तो थोड़ा रिलैक्स भी करो, थोड़ा मूवी भी देखो, नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, moving ahead, let me share the screen and I will take a look at the part B questions that are asked in UCEED. Through UCEED, I am going to tackle seed का sketching वाला question as well, because it is the same thing. UCEED में the questions are of the wider, I would say, the question का marks ज़्यादा है, तो wider in terms of the number of topics that they are asking in single composition is more than what they are asking in seed. So for that reason, even if you attempt UCEED का question, those who are attempting seed, it will be helpful for you. Now let's take a look at this question. So composition question, let me be very frank about it. Composition questions are difficult questions to attempt. And it is not something that you can start from day one in your preparation. It will take time. पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं आपस में, ठीक है? तो how to attempt this composition based question? Now I have also created some of the designs for videos for how to tackle part B का question. I will what I will do is I will share that in the chat as well. अभी तो कर दूंगा तो आप सब वो देखने लग जाओगे, तो not right now but towards the end. So I have shared that कि कैसे मेमोरी डिजाइन, मेमोरी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के ऊपर मैंने बात करी है. Now before I get into memory drawing, let's talk about this question. There are so many things in this question. Have you read this question? There is 5-year-old Geet, her grandmother, grandfather, है ना? Then there is a big garage, there is football and other objects that are kept there. Father is cleaning using cobweb. Grandmother is playing guitar. Geet is dancing. So many things are happening. So there are 3 characters, and then these 3 characters are involved in so many things. Now, once you have read this question, how will you attempt this question? See, the first thing is you break question. You cannot do this in the exam. Let me tell you very honestly, this is the disclaimer. You can do it right now only while you are preparing. Break this question into parts. So there is a 5-year-old kid who is dancing. This is first part. Grandmother is playing guitar and grandfather is cleaning the garden using cobwebs. These are the 3 parts. Now, can we not draw these 3 parts separately? Can we not draw these 3 parts separately? So when you are attempting these questions, attempt these 3 parts separately. Even Geet dancing can have different dance forms in terms of किस पोज में आपने गीत को कैप्चर किया, समझ रहे हो? इफ ग्रैंडमदर इज प्लेइंग गिटार, किस पोज में आपने ग्रैंडमदर को कैप्चर किया? व्हेन आई से कैप्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज अ ड्राइंग, इट इज नॉट अ वीडियो, राइट? सो आप कैप्चर करोगे उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में. नाउ दैट फॉर्म और द वे यू आर कैप्चरिंग इट शुड बी कैंडिड. इट शुड नॉट लाइक कि वो कैमरे में देख रहे हैं, गिटार हाथ में पकड़े खड़े और आपने उसको ड्रॉ कर दिया. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. दे शुड बी इन्वॉल्व इन दी work that they are doing. It is as simple as that. So can we not break it into 3 different parts? And can we not today just sit and draw Geet dancing around? Geet as a character, and then the same character into different dance forms as if she is involved in her dance. He or she, whatever. आप समझ रहे हो? And then tomorrow or maybe today itself, अगर आपके पास time है, we can draw grandmother also. And then on the 3rd day, we can draw the garage. जो पीछे garage का बोला गया है, we can imagine that, right? This way, slowly if you start working, so you will. अब जैसे आप garage बनाओगे तो उसमें जो डिटेलिंग आप ऐड करोगे, जब आप grandmother बनाओगे उसके लिए जो कैरेक्टर बनाओगे, उस कैरेक्टर के साथ जो आप अपने डिटेलिंग में हर बार अलग अलग पोजिशंस में बना रहे हो, that is going to open up your visual memory, visual vocabulary आपकी बना रही है. Whenever character like this will be asked in the exam next time, you will be able to take reference from here. I hope I am making sense to you guys. And then maybe one day you can compose all of these together in one form and then come up with the composition. Now what I am saying is, if you compartmentalize a question like this compartmentalization you can see in the seed as well. So if you look at the seed, so seed के question में वो कैसे होगा? A grandmother is playing guitar in her living room, maybe, or not in the living room only, just playing guitar. That is what they will ask. Look at the question that is from seed. Sketching ka question. A 7-year-old Chintu collected her old toys in the carton. The carton weighs around itna. Draw Chintu lifting the box, keeping it the top shelf of the cupboard. That's it. Just lifting the box and keeping it on the top shelf of the cupboard. That is what he's doing, and you have to draw this.
Is it not from the same kind of composition? Can I not create a big composition out of this, which can be asked, the bigger composition can be asked in UCEED and the smaller one can be asked in CEED because of the marks. So the point is, if you compartmentalize it this way, that is how you prepare for this composition based question. And you will have references also. The best reference would be animated films. And I think you should watch animated films as well. क्योंकि वहां से एक तो when you see something and if you like animation movies, so you will be able to correlate with the character. Once you correlate with the character, you can draw those characters. राइट कोई भी एक फ्रेम ले लिया, आपको बहुत सारे इंटरनेट पे उसके फ्रेम्स मिल जाएंगे, किसी भी एनिमेशन मूवी को उठा लो एंड ट्राई टू ड्रॉ दैट character. Once you have drawn that character, try to draw that simple character into different, doing different functions. You can use those character in your drawings as well. It doesn't matter because stylized काम यहाँ पे चलता है. Let me tell you honestly. Okay, so it doesn't matter that way. Okay. स्ट्रेस कैसे मेंटेन कर एग्जाम में? स्ट्रेस मेंटेन नहीं करना भाई, स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है. पूछ रहे हैं Sanidhi is asking how to maintain stress. You don't have to maintain stress, okay? You have to minimize the stress. Anyways, we will talk about that. I'm just joking. I hope you won't mind, Sanidhi, है ना? तो anyways, उसके बारे में बात करते हैं. ओके, तो ये मेरे को बताना था. दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास सेम क्वेश्चन है, सो दिस इज डिफिकल्ट, बट इफ यू कैन डू इट, इट वुड बी बेटर. If you attempt the same question, this question, multiple times, but changing the scenario every time. I mean, changing the character, changing father character, grandfather character, whatever, father character, grandmother character, garage character, character as in the setting of the garage. If you change it and attempt the same question 2-3 times, not in the single day, maybe after a few days or after a week, that will also make you more creative. That way, you will have multiple setting for one particular thing. You will have multiple characters doing multiple things for one particular prompt. That will also help you improve your drawing capability in the exam. So, बहुत सारे questions इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा. एक ही question से बहुत सारे questions बन सकते हैं. Think about it from that perspective. ठीक है? In fact, attempting CEED का question also for UCEED will be very helpful. क्योंकि ये तो पहले ही compartmentalize है ना, तो इसको attempt करो, क्या दिक्कत जा रही है इसमें, है ना? Sahil is asking, I'm able to draw this separately, but when I have to draw something which require a lot of humans, I mess it up every time. Yeah. So in that case, if you know, see what, very good situation. You know your problem. What if you know the problem? If you can articulate the problem, half of the work is already done. I mean, half solution you already know. अब half सिर्फ ये बचा है कि multiple humans के साथ practice कर लो. Forget about this question जिसमें कि multiple human एक साथ डाल रहे हैं. आप कोई भी और कॉम्पोजिशन मल्टीपल ह्यूमन लाके डालने की कोशिश करो. आई थिंक दैट विल हेल्प यू. ओके, मेरा क्वेश्चन चेक नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पार्ट ए कट ऑफ नहीं मिला. इसके बारे में तो क्या ही बोले. एनीवेज, सो दिस इज व्हाट. नाउ लुक एट द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. डू नॉट यूज कलर. पहले तो सीड में क्लियर लिखा रहता है और यूसीड में भी ओनली यूज पेंसिल, और खास करके स्केचिंग वाले क्वेश्चन में. इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन, कॉम्पोजिशन, ऑब्जर्वेशन. पर्सपेक्टिव की बात करते हैं सबसे पहले. सो एक तो होता है कि आपने सिंगल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से चीजों को बना दिया. द अदर पर्सपेक्टिव इज द डायनेमिक पर्सपेक्टिव, एज इन कि आपने ऐसा एंगल चूज किया. जैसे आप मूवी भी देखते हो तो आप देखते हो कितने अलग अलग एंगल से कैमरा एंगल चेंज होता रहता है. एंगल चेंज होता है तभी आपकी बोरियत खत्म होती है फिल्म देखने की, अदरवाइज इट वुड बिकम वेरी बोरिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप 3D मूवी देखने जाते हो तो देखा आपने कि कितने पास तक कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ जाते हैं. सो दिस मेक्स यू इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर और व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन. सिमिलरली, आप किस तरीके का पर्सपेक्टिव रखते हो, यानी कि कैमरा एंगल क्या रखते हो, वो उतना ही इंटरेस्टिंग बनाता है आपके कॉम्पोजिशन को. अदरवाइज वो बोरिंग लगता है देखने वाले को. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और आप देख लोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्या करना है. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हिच इज डिजाइन एप्टीट्यूड. सो लास्ट ईयर दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन प्रोडक्ट डिजाइन. Let me very frankly tell you, and I have been iterating this last year also, and this year also I'm telling you, please be prepared कि डिजाइन एप्टीट्यूड में they are not just going to ask you प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन because they asked you last year. No, they might change. डिजाइन एप्टीट्यूड बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है. But if you look at design aptitude at the basic level, it is always about one thing, which is problem solving. So how they ask problem solving, it can be myriad ways, it can be multiple ways through which they can ask this. For example, the fifth question in CEED is also on problem identification. If you see, for example, shown below is the image of a rural kitchen. There are
Many challenges in using such setup for cooking related एक्टिविटीज ड्रॉ एनोटेट 5 डिस्टिंक्ट डिजाइन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम यूजर फेस कर रहा है ये आपको ड्रॉ एनोटेट करना है। सिंपल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन। इवन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन यूसीडी, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट बिकॉज डिजाइन एप्टीट्यूड मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, सो यहां पर अभी उन्होंने प्रोडक्ट वाइज पूछ दिया, सिर्फ उसी की तरफ प्रिपरेशन मत करते रहना। ओके ओके, सार्थक इज सेइंग अ पॉइंट व्हिच okay, I was enjoying the process, but yesterday I got to know that I am suffering from dengue. Arre, now I don't know what should I do. I am feeling very anxious as the exams are very close. No, it is not. See, dengue generally takes 1 to 2 weeks in recovery, है ना। उसके बाद मतलब पूरा ठीक होने में, उसके बाद रिकवरी का फेज चलता है which is where you feel थोड़ा सा weakness. I think, am I visible to you? I'll switch off my camera for a bit, I think. Okay, so उसके बाद थोड़ा सा कहते हैं उसको कि रिकवरी का फेज चलता है जिसमें थोड़ी सी वीकनेस रहती है, बट यू विल बी एबल टू गेट बैक टू योर प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा। सो राइट नाउ यू कैन स्टॉप इट, इट डजंट मैटर, बट यू कैन डू योर मेंटल प्रिपरेशन। व्हाट इज मेंटल प्रिपरेशन? आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो because Sarthak asked this, and Sarthak, I want you to please take care of yourself. But for you, I want to tell you this exercise, and this is for everyone. Everybody can do this. This is called design internalization exercise. This is what we do with students in our program at C2D. So I wanted to tell you about this. What is design internalization exercise? What you have to do is, see, मैंने बोला कि क्वेश्चन जो अभी आपके सामने है डिजाइन का, ये डिजाइन एप्टीट्यूड, इट इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो लेट्स वर्क ऑन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. हाउ वी कैन डू दैट? Look for items in your life, daily life, in your home. It can be related, for example, it can be a wiper that you use to clean the floor. It can be a utensil that you are using at your home, which you feel कि यार इसको use करने में बहुत दिक्कत आती है. It can be anything. It can be any product. It can be refrigerator. It can be a utensil, like I said. It can be your shoe. It can be anything which you see in your घर, अपने घर में यूज करते हुए. टेक वन प्रोडक्ट डेली. यू हैव टू टेक वन प्रोडक्ट डेली. ऐसा नहीं है कि आज नहीं करते कल करते, नहीं. बट व्हाट आई एम सेइंग, दिस डिजाइन इंटरनलाइजेशन, मतलब डिजाइन आपके अंदर इम्बाइब हो जाए, आपके खून में चला जाए डिजाइन. उसके लिए ये एक्सरसाइज है. टेक वन प्रोडक्ट डेली एंड यू हैव टू फाइंड 5 to 10 प्रॉब्लम्स इन दैट. देयर विल बी प्रॉब्लम. देयर आर नो प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड जिसमें प्रॉब्लम नहीं होता है. If you are not able to find the problem, ask your parents who are using it, maybe your siblings, brother, sister, whoever using it. नाज देम कि आपको कोई इसमें लगता है कि इसमें कुछ ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो, समथिंग लाइक. आस्क दोस क्वेश्चन, नोट डाउन दोस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू, वंस you have noted down this question, you can take it to the next level. How you can take it to the next level? Try to draw the solutions for them. Try to draw the solutions for them कि कुछ ऐसा होता तो कितना अच्छा होता. This is called design internalization exercise. If you do this, I am telling you, किसी पेपर पे मुझसे आप साइन करवा लो, यू विल नॉट रिक्वायर एनी कोचिंग और वॉट एवर टू क्रैक दिस डिजाइन एग्जाम. एक इसमें चीजें और, इसमें थोड़ा सा चैलेंज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड वन मोर चैलेंज. while you are drawing something, do not use any text. Only drawing. Through drawing only you have to convey, no text. So this is called design internalization exercise. I think, Sarthak, this will be useful for you. You cannot draw or anything as of now, but you can take up a product, think about it as if लेटे भी हुए हो या बीमार भी हो, तो you can think about it, so that will only help your preparation. Okay, anyways, take care. How to practice product design questions. I think I have, Yuvraj, just answered this, isn't it? This will help you with the product design question. Anyways, so design aptitude में, like I said, ये product design का question है, but also take a problem solving which can be improved with design internalization exercise that I told you. All right, moving ahead, let's move on to now let's move on to the part B of CEED. From CEED perspective, let's start नीचे से ही, जब यही खुला हुआ है तो problem identification में. Now there are, this can be for bachelors also, because problem identification का एग्जैक्ट आ गया तो प्रॉब्लम कैसे, अच्छे प्रॉब्लम कैसे ढूंढे, इस पे बात कर लेते हैं. सो दिस इज आज CEED. तो ये अच्छे प्रॉब्लम पूछने की जो बारी आती है कि कैसे पूछा जाए, बताया जाए कैसे आई कैन कम अप विद अच्छे प्रॉब्लम्स. इसका एक बहुत अच्छा और सरल तरीका है. तरीका ये है कि वेन एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, राइट,
quickly jot down as many problems as you can. Quickly jot down as many problems as you can. If you will jot down problems somewhere in the rough, for example, shown below is the image. Let's do this question. Let's attempt this question. आप अपने साथ कर सकते हो जहां पे भी बैठे हो. Think about it. You don't have to tell me. Shown below is the image of a rural kitchen. There are many challenges using such setup for cooking the related areas. Evaluation criteria देख लेते हैं. हमें 5 प्रॉब्लम बनाने हैं. Use only one visual for each problem. Answer ठीक ठीक ठीक. Significance of the problem identified. Evaluation criteria. Significance of the problem identified. मतलब वो प्रॉब्लम कितना रेलेवेंट है जो बंदा इस किचन को यूज कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि मॉड्यूलर किचन में, करोड़ों के किचन में होगा, और ये रूरल किचन में जहां पे उनके पास गैस भी नहीं है, चूल्हा वो लकड़ी पे जला रहे हैं, ऐसी आप अंबानी के घर की बात करोगे तो दैट इज नॉट रेलिवेंट टू देम. पहला, दिस इज फिजिबिलिटी, पहला है ना. तो सिग्निफिकेंस उसका फिजिबिलिटी पे होगा. सिग्निफिकेंस ये भी होगा कि वो अफोर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे कितना वो चीज एप्लीकेबल है. ठीक है. दूसरा है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई यूनिक प्रॉब्लम्स. हर एक प्रॉब्लम, हर जैसे आपने 4-5 प्रॉब्लम ढूंढे, अभी हम सोचेंगे, आप भी सोचते रहो साथ में. हर एक प्रॉब्लम अपने आप में एक दूसरे से कितने अलग है, या फिर आपने सारे प्रॉब्लम एक ही जगह से सोच लिए. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आपको कि यहाँ पे जो आग जो लगा रहे हैं, द वे दे आर गिविंग फायर टू दिस, तो ये ओपन में है पहला, तो इससे जल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने ये सोचा, फिर आपने इसी से रिलेटेड बोला कि अरे ये ओपन में है, इससे बर्तन नीचे गिर जाएगा, बर्तन भी खराब हो जाएगा. फिर आपने बोला अरे ये आग ओपन में है, इसकी वजह से क्या है कि ये बाहर भी गंदा कर रहा है. तो आपने तीनों प्रॉब्लम सिर्फ ये आग ओपन में इसी के बारे में सोच लिया, इसके बाहर आप सोच ही नहीं पाए. सो द पॉइंट इज आइडेंटिफाई यूनिक प्रॉब्लम. आपने एक बार वो ओपन है आग, उसके जैसा सोच लिया. नाउ हाउ कैन यू think of different problems? This shows your flexibility of mind कि you can quickly switch from one problem to different problem. This shows your flexibility, which is called critical thinking as well. Okay. The last part is ability to explain the problem through visual, which is based on drawing. Let's not talk about that. है ना? I made rough sketch which has dedicated place for keeping those sticks and way to collect ashes and part to keep utensils. Okay. Sounds great to me. तो सही बोला उन्होंने. तो सही बोला इन्होंने कि पहले जो है हमारे को 2-3 चीजें क्लियर दिख रही हैं कि यूटेंसिल सही से रखने के लिए जगह नहीं है. और देखो, वेरी क्लोज टू द फायर, वेरी क्लोज टू द फायर, इफ यू सी द स्टिक्स आर केप्ट. इवन इफ वन स्टिक कैच फायर, होल किचन विल कैच फायर. इजंट इट? एवरीथिंग इज कनेक्टेड, है ना. देयर इज नो स्पेस टू कीप द pans and all the objects that they have. वो सब वहीं पर एक जगह पर ही रखा हुआ है ना. तो उन्होंने स्टिक बनाने के लिए इसमें सॉल्यूशन नहीं देना था, लेकिन इफ यू हैव कम अप विद सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम देना है ना. सिर्फ प्रॉब्लम वी हैव टू कम अप विद. अनदर, सो अनुज इज सेइंग कंट्रोल ओवर फायर, द टोंग इज मेड आउट ऑफ स्टील. ओके, सो गर्म हो जाएगा, हाथ से जल जाएगा. Suffocation is a very good point. Dry stock is close fire. Yes. See, so you can come up with solutions if you will think for some time. Definitely, you can come up with solution. Smoke is also a problem. Yes, yes. Of course, suffocation is a problem. So ये जो अब आपने solution सोचे, ये distinct solution, distinct problem है, which are they are separate from one another. ऐसा नहीं है कि एक ही के ऊपर सब कुछ सोच लिया. So that is how problem identification. So if you come up, so right now when you are attempting question, do not think about if the problem is unique or not. Just jot down all the problems. For example, you just write it here as many problems you can. है ना, आपने लिख लिया एक जगह जितने भी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो. Once you have written that, then go ahead and think about कि यार ये जो मैंने प्रॉब्लम सोचा, should this problem be considered or not? No, I think I should take this longer one first, and then the second one, and then the third one. So that is how you attempt these questions. I hope I'm making sense to you. इस तरीके से आपका काम इजी हो जाता है. अदरवाइज आप सोचोगे पहली बार में ही कर दिया जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो डिजाइन इंटरनलाइजेशन एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. किचन के सेटअप के लिए बोल रहे हैं. यू everywhere, once you do design internalization exercise that I'm talking about, one product daily, if you do it for 1 to 2 weeks, 14 days, if you do it, it will just come into you. Everywhere you will see a product or a space or anything, and you will come up with problems. तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बोलेंगे कि आप दुखी आत्मा बन गए और आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं चीजों में. बट एज अ डिजाइनर, इट इज अ वेरी गुड एटीट्यूड. इट इज अ वेरी गुड एटीट्यूड. यू शुड सी प्रॉब्लम्स ओनली. व्हाट
जेन्युइन जो रेगुलर पीपल है, एज अ ले मैन, दे आर यूज टू प्रॉब्लम्स. उनको समझ ही नहीं आ रहा कि दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड दे आर यूज टू वर्क विद प्रॉब्लम्स एंड नॉट थिंक अबाउट कि ये प्रॉब्लम भी है. बट एज अ डिजाइनर, दैट इज व्हाट वी डू. वी कम अप विद सॉल्यूशंस, वी कम अप विद प्रॉब्लम फर्स्ट, right? Now let's take a look at the form sensitivity question that is asked in the design exam of CEED. If you are preparing for UCEED, तो प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन भी फॉर्म सेंसिटिविटी के ऊपर ही बनता है, सो दैट विल हेल्प यू हियर एज वेल. ऑलराइट, सो टेक अ लुक फॉर फ्यू मिनट. फॉर्म सेंसिटिविटी आता है 3D. अगर देखा जाए तो मुझे पहले 2D शुरू करना चाहिए एंड देन कम टू 3D, बट इट्स ओके, इट डजंट. अब मैं दोनों एक साथ ले लेता हूं फॉर दैट रीजन. ओके, वन इज फॉर 2D, इट इज कॉल्ड विजुअल सेंसिटिविटी, एंड फॉर्म सेंसिटिविटी इज फॉर 3D. एक 2D है, एक 3D. आप समझ रहे हो 2D 3D में डिफरेंस क्या हुआ? 2D फ्लैट हुआ, 3D में डेप्थ भी हो गई है ना. When we see 2D, we see something in terms of shapes and lines. I hope you're understanding. Only in terms of shapes and lines. Shapes and is 2D shapes. This is circle, square, rectangle, something like that. Okay. We see things only in shapes and lines in 2Ds. In 3D, we see shapes in 3D structures and in the form of material that is used and the ergonomics. अब ये सुनने में थोड़ा सा difficult लग रहा होगा topic. Ergonomics is nothing but how user interact with that particular product. कोई भी 3D, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेन रखा हुआ है, सो इट इज अ 3D प्रोडक्ट, राइट? 3D, इसमें डेप्थ है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है ना. सो इस 3D प्रोडक्ट में हाउ आई एम यूजिंग इट, हाउ आई एम होल्डिंग इट, इज इट, क्या इसका पीछे वेट बहुत ज्यादा है एंड आई एम नॉट एबल टू राइट वेल, दिस इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स. हाउ यूजर इज इंटरेक्टिंग विद इट. लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बस इतना समझ लेते हैं. सो व्हेन वी आर लुकिंग एट अ 3D ऑब्जेक्ट और अ प्रोडक्ट, we will take a look at the shape, the 3D shape, the material that is used, and the ergonomics. Ergonomics is how we are interacting with how user is interacting with the product. Now let me tell you one more thing. The shape, तो पहली मैंने बात बोली थी shape, कि पेन का ये शेप है. This shape will also define its ergonomics or the functionality. इसको डिजाइन में बोलते हैं form follows function. यानी कि इसका ये फॉर्म बनाया है, पेन का इस तरीके से फॉर्म बनाया, इट इज टेपर्ड टुवर्ड्स द एंड टू मेक इट इजियर फॉर मी टू होल्ड इट एंड राइट इट, राइट? So this is the functionality of the form. So this shape of the form is based on the function that I have to perform through it. तो function के बेसिस पर ही उसका शेप बना है, शेप के बेसिस पे फंक्शन नहीं हो रहा है. सो फॉर्म फॉलोज फंक्शन होता है डिजाइन में. तो आप भी जब कोई प्रोडक्ट का ड्रॉ कर रहे हैं 3D शेप में, तो उसको इसी तरीके से सोचना है कि अल्टीमेट गोल उससे मुझे क्या अचीव करवाना है, एंड टू अचीव दैट गोल व्हाट शुड बी द परफेक्ट शेप दैट आई शुड हैव. This you don't have to think from scratch in the exam, because I generally recommend कि whatever is available in the world, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस लेके भी आप कर सकते हो. बट दैट इज द बेसिक ऑफ फॉर्म सेंसिटिविटी, यानी कि शेप्स 3D में, मटेरियल जो यूज हो रहा है, और अर्गोनॉमिक्स, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यूजर उसके साथ कैसा इंटरेक्ट करता है. दिस इज फॉर्म सेंसिटिविटी. इसको आपको थोड़ा सा और समझना है, सीखना है, तो डी सोर्स पे, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, डी सोर्स पे there is a article, or they say course but it is an article only. जैसे एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म्स है, इसमें एलिमेंट ऑफ फॉर्म 1 2 3, तो उन्होंने थर्मोकोल से चीजों को बनाया. पहले 2D बनाया, फिर उसको 3D बनाया. लेट मी शो यू. पहले दे क्रिएटेड दिस 2D फॉर्म, एंड फ्रॉम दिस 2D फॉर्म दे क्रिएटेड 3D फॉर्म्स through using a thermocol. You can take up this exercise if you want, if you have time. Otherwise, you can go through it. You will also understand what they are doing. What is the criteria behind it? So how they are visualizing 3D form, that is what they want to show you. Similarly, they have one more course like this on D source. I will share everything in the chat section after we end this. यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में फॉर्म्स के बारे में मिल जाएगा. द बेस्ट वे टू, सो सी डिजाइन एंड नेचर में भी उन्होंने दिया हुआ है कि हाउ नेचर से वी कैन टेक अप फॉर्म्स, 3D फॉर्म्स कैसे लिए जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया. सो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स आई थिंक. ओके, yeah, hanging chair inspired by B.Des for form sensitivity. Yes, very good, Anuj. All right, so this is what I wanted to tell you about form sensitivity. The best way to practice form sensitivity is the reverse engineering of any product, like what I did with the pen. And take up any product. So any product that you are taking up every day for design internalization exercise, any product, think about it
कि why this particular form of this product, for example a chair, can a chair not have another form? And guess what, if you will look at it on Pinterest, let's say, you will see that some designers have worked or experimented with the form of a chair or any object as such. If you take a look, so they have. So even if you take a look at the ergonomics mouse, have you heard about it? Those who have play games on internet, they might know what ergonomic mouse is, right? तो उन्होंने फॉर्म चेंज कर दिया ना माउस का, जो नॉर्मल माउस होते थे उससे चेंज कर दिया. तो एवरी प्रोडक्ट डिजाइनर्स आर वर्किंग एक्सपेरिमेंटिंग विद द फॉर्म. सो थिंक अबाउट इट कि कोई भी आप प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हो, क्या उसका कोई और शेप भी हो सकता था? क्यों नहीं होता? अगर हो सकता था तो क्या वो अच्छा होता? जस्ट थिंक अबाउट इट. यू डोंट हैव टू बी 100% राइट अबाउट इट. जस्ट स्टार्टिंग टू थिंक इन दैट डायरेक्शन कैन हेल्प यू. Then the second thing would be, I hope you are writing down or noting down things, because then you will have to go through this video again. This is one thing in form sensitivity, that is reverse engineer the product. The second thing is take products from different themes. For example, if you will see stationery is a common thing. Why I'm telling you is stationery is something that is used by adults also, kids also. When I say kids, yani ki primary school wale kids, it is used by normal students as well, right? Now take same pencil or eraser or whatever from three different sections. You can find it on internet. You don't have to buy these products. सिर्फ देखो और देखो कि उनके शेप में कैसे डिफरेंस बनाया है. फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल आप देखो, बच्चों के स्कूल का जो वाटर बॉटल, छोटे बच्चे एकदम जो नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी वाटर बॉटल देखो, थोड़े बड़े की वाटर बॉटल देखो, जो जिम जा रहे हैं या फिर जो एथलीट हैं उनकी वाटर बॉटल देखो. डू यू सी चेंज इन दी शेप? You will notice the change in shape. Why they have made that particular shape based on that particular audience? Think about it. Once you think about it, you will be able to attempt form sensitivity wale question, because now you are thinking, what is form sensitivity? Change in form, deviation in the shape, and you are able to understand why we deviated. What was the reason we deviated? So this is what form sensitivity is all about. It is the basic structure, or you know, बेसिक स्ट्रक्चर एट विच प्रोडक्ट डिजाइन स्टैंड्स. इसी के ऊपर पूरा प्रोडक्ट डिजाइन बनेगा. तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो प्रोडक्ट डिजाइन आप अच्छा करोगे ही करोगे. So these are some basics that I'm talking about. I hope if I am making some sense, guys, please let me know in the chat box कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि क्या पता नहीं क्या ज्ञान पे ले जा रहा है यहाँ पर ये. अगर तो आई कैन चेंज दैट, बिकॉज my aim here is to just give you a gist on how to prepare, है ना? So that you get an idea. So I am just trying to break down questions if there are any master students here, ki what it is. Okay, coming to the visual sensitivity. Visual sensitivity is, again, it is 2D shapes. So you are looking things in terms of line and shapes. ठीक है. इसको भी, इसके लिए भी डी सोर्स पे बहुत अच्छे से एक आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, जिसमें इन्होंने अलग अलग आइकन्स बनाए हैं. इंडियन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट सिंबल्स बनाने की कोशिश करी है 2D में. सो गो थ्रू इट, यू विल सी कि हाउ दे हैव कम अप. पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इलस्ट्रेशंस एंड एवरीथिंग. सो दिस इज वन. अनदर कोर्स इज सिंबल्स, डिजाइन ऑफ साइनेज. तो ये उन्होंने कैसे बनाया है, इसके ऊपर भी बहुत सारे एयरपोर्ट सिंबल्स, ग्राफिक सिंबल, ट्रैफिक सिंबल. सो पूरा केस स्टडी है, इसको भी आप देख सकते हो. दिस इज वेरी गुड फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज tomorrow if you want to create your portfolio, going through this you will also understand how to present your work as well, what is required in the portfolio and everything. That will also give you a good idea. So go through it. I will share the link with you. All right. Now coming to 2D elements, I also want to tell you I have created a video 3 years ago. I created a video on visual sensitivity. I will share that also. जिसमें मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था which was related to फ्लावर्स के फोटो दे दी गई थी, पिक्चर्स दे दी गई थी, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ आइकन्स बेस्ड ऑन दैट. सो बेस्ड ऑन इमेज यू हैव टू ड्रॉ आइकन्स. सो आई हैव in detail discussed everything on visual sensitivity there. I will share that as well. Talking about visual sensitivity, it is the easiest topic to tackle, I think, but difficult in the exam to answer, because अगर लोगों का क्वेश्चन पूछ देंगे वो, सी विजुअल सेंसिटिविटी के अंदर ही लोगो आता है. विजुअल सेंसिटिविटी के ऊपर पूरा कम्युनिकेशन डिजाइन का स्ट्रीम बनता है. वो बेसिक स्ट्रक्चर है विजुअल सेंसिटिविटी. ठीक है. तो अब इसमें आपके ऊपर लोगों का क्वेश्चन आ गया तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा डेफिनेटली.
बिकॉज वो एडवांस हो गया, लोगों में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी आ जाती हैं कि वो कैसे प्रेजेंट करेंगे एंड ऑल, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, स्लोली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट. अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग हियर विल वर्क. व्हाट वी डिड विद प्रोडक्ट, वी कैन डू द सेम थिंग विद लोगो, कि ये लोगो क्यों बना होगा, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दिस. अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई भी लोगो उठा के देख लोगे, मतलब आई मीन एनी XYZ कंपनी का लोगो देखोगे, उसके बाद उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है डिजाइनर जिसने बनाया है, he or she might not have put that much effort, uh, while researching for that logo. I would say, I'm not say designing that logo, but researching for that logo, because see, अलग अलग टाइप के दुनिया में डिजाइनर्स हैं, तो कई बार लोगो बना करके भी रीजनिंग दे दी जाती है. सो आई विल ओनली सजेस्ट गो फॉर इंस्टीट्यूशंस वेयर यू नो काफी रिसर्च करके लोगो बनाए जाते हैं, खास करके इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बाहर के भी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें अच्छे डिजाइनर्स काम करते हैं लोगों पे. तो दैट विल बी अ गुड गुड वे. उस पर रिसर्च करो कि क्यों इस तरीके का लोगो बना है. देर आर मेनी क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब राइट नाउ. यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस लोगो डिजाइन वाले. तो टेक अ लुक एट हाउ दे आर डिजाइनिंग लोगोज. नो, यू डोंट हैव टू डिजाइन लोगो ऑन इलस्ट्रेटर और ये सब सीखने की जरूरत नहीं है. द माइंडसेट दैट दे आर पुटिंग इन, आई मीन व्हाई दैट पर्टिकुलर शेप. नाउ दे माइट सी, व्हेन यू स्टार्ट लोगो डिजाइन के क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इज कि हम शुरू करते हैं कि लोगो डिजाइन के बारे में समझेंगे, और हम पहुंच जाते हैं इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स पे कि ये इतना मुश्किल है इस शेप को बनाना, देखो आप इलस्ट्रेटर पे इसको ऐसे बना सकते हो. भाई वहां मत पहुंचना. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द माइंडसेट दैट इज नीडेड टू अप्लाई, दैट इज अप्लाइड हियर. व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज इट. यू हैव टू मेक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंगफुल. दैट इज व्हाट लोगो. ठीक है. That is what. Now, I want to also tell you one more thing. In both these topics, and this is for bachelors as well, both of these topics, there is one more thing which is not written here, I think, this time. Yeah, it is written here. This is a word which is called visual language. ये visual language जो है, देखो visual characteristic यहाँ भी लिखा हुआ है, ये भी visual language ही है. तो ये visual language जो है evaluation criteria में दोनों में रहता है. So what is this visual language, ये भी आप समझ लोगे तो आपको और टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी. तो विजुअल लैंग्वेज का मतलब है कि अगर वो 2D शेप है, मतलब कि अगर विजुअल सेंसिटिविटी की बात हो रही है, तो कंसिस्टेंसी इन दी लाइंस एंड शेप्स. कंसिस्टेंसी. आपने आइकन्स देखे होंगे जिसमें कि कई बार आइकन अंदर से कलर फिल नहीं करे जाते, सिर्फ आउटलाइन बनाया जाता है. कई बार ब्रेक लाइन होती हैं आइकन्स में, कई बार डॉटेड लाइंस होती हैं आइकन्स में. आई होप यू हैव सीन दैट, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आइकन्स यहां देख रहे थे, देखो, डू यू सी सम काइंड ऑफ continuity in this, the way objects are drawn. See, all of them are from the side angle, from the side perspective. They are flat. The shapes are repeated. If you see this kind of eye-like shape, that is repeated everywhere. Do you see that? So that's what I want to tell you is कि जब हम visual language की बात करते हैं तो particular shape, particular line वो repeat हो रही होती है. अगर मैं 2D में बात करूं, वही मैं 3D में बात करूंगा, तो 3D में भी क्या होता है कि मटेरियल, जैसा मैंने बोला, अर्गोनॉमिक्स, और 3D शेप जो है, मतलब शेप इन द सेंस कि साइड से रफ है सरफेस, स्मूथ है सरफेस, मटेरियल क्या यूज हुआ हुआ है, कलर कैसे यूज हुए हुए हैं, ये विजुअल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है. तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या 3D शेप्स या 2D शेप्स कर रहे हो, तो ये विजुअल लैंग्वेज यानी कंटिन्यूटी इन लाइंस एंड शेप्स और कंटिन्यूटी इन 3D फॉर्म्स शुड बी देयर, शुड बी सीन. आई होप आई एम मेकिंग सेंस, है ना. तो आप जब ये करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे एक बॉटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड यू हैव टू ड्रॉ अ टिफिन बॉक्स फॉर दैट कंबाइनिंग अ बॉटल. तो बॉटल में जिस तरीके के ग्रूव्स हैं, बॉटल में जिस तरीके के कैप यूज किया गया है, सेम काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर इन द टिफिन बॉक्स. तभी तो दोनों लगेंगे कि एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. तो ये चीज, इसको बोलते हैं विजुअल लैंग्वेज. तो ये विजुअल लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होता है. जो आप कैसे ध्यान रख सकते हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखोगे, जो प्रोडक्ट की ग्रुप्स में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से there are many products like this. For example, vacuum cleaner, for example, trimmer, for example, utensil.
आप एक डिनर सेट देखोगे तो एक डिनर सेट के आप देखो कि शेप जो है सारे चीजों के सेम होता है। इवन द बाउल एंड प्लेट, जो कि एक पूरा फ्लैट है और एक में बहुत ज्यादा डेप्थ है, उन दोनों के अंदर भी यू कैन फाइंड आउट सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी इन शेप, कि वो कर्वीनेस जो है वो प्लेट में भी है, वो बाउल में भी है। दैट सेम थिंग कैन बी, यू कैन सी इन द स्पून एज वेल। ऑब्जर्व दिस, इफ यू हैव नॉट ऑब्जर्व दिस, नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व दिस, तो यू विल सी दिस इज कॉल्ड विजुअल लैंग्वेज, है ना। उसी तरह से ट्रिमर आते हैं या वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यू विल सी दैट ऑल द पार्ट टुगेदर विल लुक लाइक दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। दिस इज कॉल्ड विजुअल लैंग्वेज। ओके। तो जब भी आप ये फॉर्म सेंसिटिविटी, प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन करते हो, तो ये विजुअल लैंग्वेज को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑन क्रिएटिविटी, देखो क्लियर बात यह है कि क्रिएटिविटी का क्वेश्चन का पर्पस ही सिंपल यही है कि भाई आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करा जाए। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट कर रहे हैं उसमें बाउंसर्स एक्सपेक्ट करो पहले तो, बट एट द सेम टाइम एम्ब्रेस बाउंसर। इफ इट इज बाउंसर फॉर यू, इट इज अ बाउंसर फॉर एवरीवन हु इज गिविंग दिस एग्जाम, एंड इफ इट इज अ बाउंसर फॉर एवरीवन हु इज गिविंग दिस एग्जाम, दैट मीन्स इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्कोर मोर इन दिस इस क्वेश्चन। इसको इस तरह से मत लो, अरे मुझे नहीं आता। अगर आपको नहीं आता, किसी को नहीं आता, तो अच्छी बात है ना, अब आप यहाँ पे और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि पूछा ही क्रिएटिविटी जा रहा है, प्ले विद द क्वेश्चन। जस्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को ध्यान रखना है एंड प्ले विद द क्वेश्चन। देयर इज नो राइट और रॉन्ग एज सच इन दिस क्वेश्चन। हाउ रेलिवेंट यू आर, दैट मेक सेंस। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा बोलने का। That will only spoil this question. I will have to show you some questions. So maybe what I can do is creativity के ऊपर, सिर्फ creativity के ऊपर I can create a video how to tackle creativity वाले question. Uh, and I will club some of the previous questions on creativity and maybe then I will tell you how to attempt this. Yeah. So yeah, that is it from my side. That is what I wanted to tell you. Now I am open for questions if you have any. Quickly, I will debate for 5 minutes and I will take up some questions. And I hope the session was useful and it gave you some clarity in terms of questions. See, I want to repeat once again, like I said, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चाहे आप यहाँ पे क्वेश्चंस जो मैंने बताए वो आपको समझ में ना भी आए हो तो इट डजेंट मैटर। व्हाट शुड गेट इन योर हेड इज you should be free of distraction. You have to attempt question A. That is what your aim is. Attempt questions, attempt questions, attempt questions. Do not just practice drawing. डिजाइन के ऊपर मार्क्स है, सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग करने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस टू प्रैक्टिस क्वेश्चन यू विल हैव टू बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन, आई विल टेक अप क्वेश्चन। यू हैव टू बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। डिस्ट्रैक्शन फ्री होने का मतलब है चीजें इकट्ठा बस मत करते रहो, है ना। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कंटेम्पलेट करो क्वेश्चन पे। इट इज नॉट दैट कि कॉपी खोल के बैठ गए और 5 घंटे बैठ गए and I did 5 hours of preparation today. That is not counted. How many questions you attempted, how you attempted, what is the quality of that attempt, that depends. And the most important part is the positive outlook towards preparation. खुशी के साथ करो कि मैं करना चाहता हूँ, that's why I want to do it, rather than I want to go to IIT, that's why I'm doing it. That is not going to take you far, I'm telling you. I have so many examples of people quitting or giving up after IIT or NIT, even during the college as well. Dropped out of college, नहीं हो पाया design का. So this is also part and parcel of the game. So think about it from that perspective. Thank you for your shared knowledge, Arivat. Dhanyavad. Shared knowledge and loved the session. Hope we'll get more session like this. Yes, sure. I will. If you have any suggestion on the topic, so definitely you can tell me. Otherwise, I will come up with some sessions, definitely. Uh, art your way session was helpful. We'll try to implement whatever. So very good. If you will implement it, work on it, then maybe we can have a discussion on it and then we will talk about. So this is the base that we have discussed. So there are so many things that I can discuss right now, which can be level 1, level 2 of preparation. But if I start doing that, I generally hesitate talking about that on YouTube live because most of the students here are beginners. That's what I see. So if I talk about
later stage, then I think that student might not be able to understand, and also they might feel कि मैं पीछे रह गया preparation में and all. So I don't want to feel make anyone demotivated. So that's why I talk about basics here. Attempting question. What is the decent score in part B? That is a useless question, Abhilash. There is no decent. Part B gives you rank. So is there a decent rank? I will ask you. There is no decent rank. You try to score rank 1. Whatever you score below 100 is a very good score. Below 100 is a very good rank. So, but those who got 100 rank also last year, they also wanted to get rank 1. They never thought कि मेरे को 99 rank मिले बस. And that's why they stopped it. This is a competitive exam. Don't think about it as a decent score in part B. You attempt all the questions. If you leave any question in part B, let me tell you very honestly, if you leave any question in part B, you can just wrap it up and just come out, because you will not be able to clear the exam this year. Right? So you have to attempt all the questions with full dedication. In part A, you can skip questions. In part B, you cannot. Okay? तो मेरे को एक और चीज पूछना है यार, मैं थोड़ा इस तरीके से बोल देता हूँ जैसे अभिलाष को मैंने बोला है. अभिलाष, आई होप यू विल नॉट माइंड, राइट? मेरा इंटेंशन is not to deject you or to show you less. My point is to just so that you remember कि मैंने जो point बोला कि asking about this is futile, like Arnav said. So that's why I use this tone. I hope that is you will allow me to speak this way. Anyways, Ayush is asking, attempting questions in the time restrict ideas, but when that is solved without time, the idea is much more good. So how do I generate good ideas in time? Yeah, generating good ideas in time, the only thing you can do is you attempt the same question next time within time limit and try to come up with more ideas. So maybe next time you will be able to come up with the ideas that you attempted last time, plus few more ideas. This will give you confidence. This will give you boost. The point in overall, Ayush, in creativity is when we believe that we are creative. Once we are happy and we believe that we are creative, so any idea that we can come up with will be a good idea. Most of the time, what is happening with us is, and also we are fed this way. This is something that I have heard so many times. Even very good designers are talking about it. The first idea that come to your head is a shit idea. यार ऐसा भी नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल ही रिजेक्ट, मतलब कुछ भी चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है. बिल्कुल ही उठा के कूड़ेदान में फेंकने वाली बात नहीं है. मे बी यू कैन मोल्ड इट, मेक इट बेटर, है ना. हो सकता है कि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं हो आइडिया. एनी आइडिया इज नॉट इन अ गुड फॉर्म इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दैट इज फॉर श्योर. बट यू कैन वर्क ऑन इट रादर देन कि डिस्कार्ड इट किया तो बेकार ही है, चलो उसको हटा देते हैं. So that is something which comes when we start believing in ourselves. So we can make a bad idea into good idea if we have critical thinking, if we start questioning those ideas. Ki why have I thought about it? Is it functioning? Is it making it is it making the product better in any way? What is the function of the product? If we start questioning this way, any bad idea can become a good idea. So the point is, don't think about it from that perspective. It will improve slowly. That's what I want to say. Okay, how to tackle creative block? I think I just answered, Nidhi. That is how. Attempt questions that you have attempted before. This will give your morale boost, which will give your ego को थोड़ा boost मिलेगा कि यार मेरे बस की है, क्योंकि आपने पहले से attempt किया हुआ है. So attempt that question again and then try to push yourself further to come up with more ideas. You will be able to come up with ideas because you already attempted that question. Then slowly proceed. Slowly proceed. Okay, in universal design, what kind of placements can we expect? This is a question off topic, but that we discussed today, but I will take this question quickly. Universal design is part of industrial design. The whole universal design ka topic that you study in NID is from the point of view of the product or the physical product, I would say. But you understood what universal design is, I'm sure. उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ. But what happens is, see, अभी तो ऐसा चल रहा है कि in whatever stream you are in design, you ultimately go and work in UI UX. That is what the scenario has become. But from universal perspective, because these students are good in accessibility projects, matlab they understand users better, and especially users with special demands, they understand them better. So sometimes any accessibility related projects, they hire them. I mean, companies that have accessibility related projects, they hire them.
That can be physical, that can be digital as well. For example, Google also hire as a UX designer from Universal Design because they understand that accessibility ke project mein they have understanding or the knowledge of the user with special demands. So that is what. All right. I'll not take this question as of now, इससे ज़्यादा क्योंकि फिर वो भटक जाएगी. When I am solving questions from part B, how can I get feedback on what better I could do and review all my answers? ये तो मुश्किल है भाई. तो मैंने तो क्लियरली देखो एक चीज मैं बोलता हूँ और मैं हम लोग तो सैटरडे को अपनी तरफ से फीडबैक देने की कोशिश करते हैं. दोज हु आर परफॉर्मिंग वेल इन दी test or the challenge that we give. If you perform well in the challenge, we give you opportunity to give you your work and we will give feedback on that. That is what we do. This is attempt from our side. But if you ask me to give feedback for free to everyone, that is not possible because ये पूरा काफल स्टूडियो जो हम रन कर रहे हैं मैं तो क्लियरली एक ही बात बोलता हूँ कि दो ही चीज के लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ. वन इज फॉर फीडबैक एंड सेकंड इज फॉर द एक्सेस टू द कम्युनिटी. सो फॉर दैट रीजन फ्री में सबको तो ये चीज नहीं मिल सकता, प्लस हमारा भी उसमें टाइम जाता है. बट अगर आप हमारे चैलेंज, वी हैव एवेन्यूज ओपन फॉर दैट एज वेल. तो अगर आप हमारे चैलेंज अटेम्प्ट करते हो सैटरडे को, वॉट एवर द क्वेश्चन इज, इफ यू अटेम्प्ट इट वेल, you can submit your work in a PDF and we'll give you feedback on that. So that is what we do. My English is weak. This is a good question. What should I do? I'm not able to understand question. This is Ashwin. This is a challenge that I have seen so many times, and especially in part A question because some of the questions are really, lengthy. And in exam, you have like what, 1 minute or maybe 2 minutes or 3 minutes for a question, and you have to read those questions, understand it, decipher it, and maybe then solve it. And that solving also require calculation. So I genuinely, to be honest, I do not have answer for this. The only answer I can have is to try solving questions and where you are stuck. Is it the point is you do not understand particular words, figure out this. Try to be precise about your problem. You are not able to understand the particular words when they pop up. You are not able to understand the whole language, what it means, how many times you have to read it to understand it. So once you know about your weaknesses, maybe then we will be able to work better on it. For example, if you are able to understand the questions, let's say thrice or 4 times reading a question, while others understand it in 1 or 2 times, you understand it in 4 or 5 times, let's say. In that case, you will have to improve your reading speed, or maybe you will have to jot down things that is written in the question. You will have to quickly look at the image that is given in the question. So that is how you will have to help yourself quickly. So if you know your problems better, that will help you. Right now, I'm doing all drawing and preparation at the comfort of my own home, but I'm probably gonna get nervous and finish the exam hall. So what should I do about it? So attempt questions. That's what I said. Elgin, if I don't know how to pronounce your name. That is what you have to do. Go and attempt questions. Sometimes in between, go and attempt a question with time limit also. So in a week, maybe twice or thrice or whatever, or once also. You can attempt a question in time. Rest of the day, you can just attempt without time also. So this way, this time fear will slowly get, subsided. And then you will start feeling confidence by the end of December. So for that reason, do that. And if you're attempting a question, do not attempt a test in your study room or your room, wherever you are studying. Go in a different room to give the exam. Change the setting. Your around setting should change so that you should not feel that comfortable. Because on the day of the exam also, you will be sitting in a certain room where you don't know the fan will be working or not, or whatever be the situation. So for that reason, prepare that way also. Any stream specific session transportation design. Okay, Anuj, if I take up only transportation design related session, I don't know how many students would be there, and then I think that will be waste of energy from my side. But what I can do, maybe next time when I do a session on NID, I will dedicate some time to transportation design, keeping you in mind. Okay, that's what I can do. Okay, so those who attended this session, thank you for attending. And I hope I was able to add some value in your life today with this session. I will come back with some questions. We'll share some questions, and I'm thinking about it, sharing some questions related to CEED UCEED.
we'll share that, and so that you can practice it at your own time and whatever suits you. And that's it. We'll come back again. I hope you are attending all the OLP sessions as well, though Arpit, Suyash, and Manish who are conducting. And I hope the OLP sessions are helpful for you as well. So keep doing that, and I will meet you again.